Hello students, welcome to CrackGradeB online learning platform. So today we have special guest with us, Mr. Uday Singh, and he has cracked RBI Grade B 2023 exam. So first of all, many congratulations, Uday, and Thank you, sir. Thank you. welcome to the CrackGradeB platform. And today we will know your journey, that how you prepared. So first, I would like to introduce about Uday. He has completed his bachelor degree in commerce, and currently he is working with the SBI, State Bank of India, as a probationary officer. So, Uday, first thing, that it was your first attempt, or have you appeared earlier also in the RBI Grade B exam? So this was my third attempt. I had appeared for phase two in my previous two attempts, but could not clear it. And the mistake, I would say that I did not focus much on descriptive portion, and I took finance and management for granted. Maybe because I thought I had a BCom background, so it would be a cakewalk for me. But it didn't happen. So I gave attention to finance and management as well because it's scoring. If one gives considerable time to it, you can score very well in it. So I focused on descriptive and made FM my priority this time. Okay, so you are already working in your while you started this preparation for this RBI Grade B, you were working in bank. So how did you manage your time? क्योंकि बैंक में मैंने सुना है जनरली फीडबैक आता है, स्टूडेंट्स का टाइम नहीं होता है, बहुत प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर, और आजकल लेट आवर्स तक भी कई बार Right, right, जो है एम्प्लॉयज उनको रुकना पड़ता है। तो इसमें टाइम कैसे मैनेज किया? क्योंकि ये right. मोस्टली इस एग्जाम में हमने देखा है कि बैंकिंग एस्पायरेंट्स ही सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में। True, sir, true. तो सर टाइम तो होता तो नहीं है, निकालना पड़ता है। इफ यू हैव ड्रीम्स देन तो आपको, फॉर एग्जांपल मैं यही करता था दैट आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड माय टारगेट वाज दैट बिफोर गोइंग टू ऑफिस आई हैव टू फिनिश टू न्यूज़पेपर्स एनी हाउ। So हम्म। I used to do that, and I was lucky that in the last 1 year I'm posted in a rural branch. So we close it by 5:30 or 6. Then I come back home, and I did get a lot of time to study. At the end of the day, sir, I think it depends on the person. If they really are very serious about the exam, they can take time out of their schedule. I know it's tough because you'll have bad days. आपको लगेगा कि अरे इतना मैं थक के आया हूँ, अब मुझे काम करके थक के आया हूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। But you हम्म। have to convince yourself कि अभी बस थोड़े टाइम का ही दुख है ये, and if you survive these days, then life will be very easier going forward. तो टाइम तो नहीं मिलता था, एग्री, टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है बैंक्स में, स्पेशली इफ यू आर एन ऑफिसर। बट अगर आप सीरियस हो चीजों को लेके तो आप टाइम निकाल सकते हो। ओके ओके। एंड जैसे कि आपने यू यू हैव अटेम्प्ट टू यू हैव गिवन टू अटेम्प्ट्स अर्लियर, तो कई बार यस ये सर। होता है कि जैसे फर्स्ट सेकंड में मतलब आप मेंस क्लियर नहीं कर पाए, फेज टू नहीं क्लियर कर पाए, तो एक फियर ऑफ फेलियर भी रहता है माइंड में कि इस बार भी मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। तो इस राइट। जर्नी में हाउ डिड यू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ? वेल सर, इट्स ट्रू कि आपको डर रहता है कि अब तीसरा अटेम्प्ट है, इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। बट हाँ, एट द बैक ऑफ माई माइंड इट वाज कि हाँ, अगर इस बार नहीं हुआ देन आई विल गिव अप एंड आई विल कंटिन्यू विद एसबीआई। ये मेरे माइंड में था बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड जॉब। तो अगर नहीं होता है तो आई शुड एक्सेप्ट इट एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। बट देन आई सॉ पीपल अराउंड मी विद इन एसबीआई जो हर साल पेपर क्लियर करते थे। मैं तो चलो अंडर प्रोबेशन पर था, बट देर आर पीपल हु आर स्केल टू एंड स्केल थ्री ऑफिसर्स, दे आर क्लियरिंग द एग्जाम, देन व्हाई कैन नॉट आई। तो उनको देख के मुझे लगता था अभी पिछले साल इतने लोगों ने क्लियर किया एसबीआई से, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो दैट रियली केप्ट मी मोटिवेटेड। And to be very honest, while being in a rural branch, living in the rural area, it's enough of a motivation कि यहाँ से बाहर निकल के I have to do something. And वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था एसबीआई में, so it was like कि हाँ, अब निकलना पड़ेगा यहाँ से, वो ओके। एटीट्यूड के साथ। एक और जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं एज मेरा व्यू है कि हम जॉब रहती है तो थोड़ा सा एक माइंड पे प्रेशर नहीं रहता, स्ट्रेस नहीं रहता है, अगर आप राइट जॉब सर। एक तरह से आपको सपोर्ट करता है आपकी प्रिपरेशन में। राइट। इस पे आपका क्या व्यू रहेगा? कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम बैंक की जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करें, तो मैं तो जनरली रिकमेंड करता हूँ कि जॉब मत छोड़ो, यू शुड डू हार्ड वर्क वाइल वर्किंग। राइट।
नहीं सर, आई एग्री विथ यू। अगर आपके पास पीएसयू बैंक की जॉब है एंड यू हम्म, थिंक आप वो छोड़ के वापस आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करो, देन आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज यू नेवर नो अगर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा एग्जाम क्लियर। एंड एट दी अगर नहीं हुआ तो फिर आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, तो दैट विल बी अ वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन। सो जॉब आई छोड़ वुडंट के मेरे से रेकमेंड दैट टू एनीवन। और जॉब छोड़ के डबल स्ट्रेस हो जाएगा माइंड पे, एक आपको प्रिपरेशन डबल का स्ट्रेस हो स्ट्रेस, जाएगा। एक जॉब छोड़ने का हाँ। स्ट्रेस। हम्म। राइट। तो उदय, हम स्टार्ट करते हैं फेज 1 से कि क्वांट रीजनिंग वी हैव सीन इन द लास्ट 2 3 years, 3 years since 21 राइट। the level has been increased, means completely changed for the quant reasoning and GA also. So what was your strategy for the quant and reasoning? What topics you choose while at in the final exam, while attempting the questions in the final exam, specifically in the quant reasoning? Because this year we have seen that maximum students fail by the very low margin, like 0.25, zero point 0.5 marks in the reasoning. राइट। राइट। So what was your So sir, strategy? I joined SBI in April 2022, Mm-hmm. and since then, for 7 to 8 months, I was completely out of touch with quantum reasoning. So I knew I had to start practicing, because I know I can solve questions, but I need to start practicing as soon as possible because practice is very important. So I started practicing quantum reasoning in December 22 or January 23. So I started with giving sectional mocks for quantum reasoning. I started with clerk prelims because I need to start solving easy questions first. Then the level will go up. So I started with clerk prelims, sectional marks. Then I went to PO prelims sectional. Then I went to clerk mains sectional marks, because I think the level in the main exam is somewhere similar to that clerk mains exam. So I continued practicing for it, and the topics that I chose was in quant. I relied on DI because I know I cannot solve Mm-hmm. miscellaneous questions because I'm considerably weak in quant. So I know मुझे बस एक DI निकालनी है, मेरी sectional clear हो जाएगी. That's it. That was my target, and I did that in the main exam as well. I chose one DI, and thank God it worked, and I cleared the section cutoff. Now reasoning is So in concerned, quant, I sorry to interrupt you. In quant, only this DIU attempted. yes, only one set of DI attempted. That's it. I did not want to waste my time on other missing number series or miscellaneous questions, because I know it will take a lot of time and I won't be able to solve it. Then it will create a mental pressure on me as well So कि solve नहीं हो रहा, अब you क्या took a करें. calculated risk. हाँ, कि DI में जाएंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर. But it worked out, thank God. So, and in reasoning, I chose miscellaneous questions first, like syllogisms and inequality. There were around 4 to 5 questions from these topics. So first I did that, and then puzzles. Puzzles are always a risk because the level of puzzles in RBI exam is quite high. Mhm. So I relied on critical reasoning because I'm good with language. So I thought कि critical reasoning के 4 5 question attempt हो जाएंगे, then it would be good. So I practiced critical reasoning as well, conclusion, inferences, and the course of action and all that. So I practiced critical reasoning questions, and in the main exam as well, I attempted critical reasoning and miscellaneous questions. I did not attempt any puzzle Okay, okay. because it's And always a risk to attempt puzzles. yes, yes, because lengthy puzzles are there, and you have a lot of Uh, pressure while solving the question. exactly. That if suppose Hmm. you are Right. stuck in a puzzle, then you will Hmm. lose the time and you will get demotivated also. It will impact other Right. sections as well. अगर एक पजल बिगड़ गया तो फिर पूरा सेक्शन बिगड़ जाता है सर. Yes, yes. And time is very crucial for this exam because Very, very crucial. questions are very lengthy. I mean, miscellaneous questions you cannot easily solve in seconds, or it takes time. Hmm. So yes. And now Right. comes to the most important part of this exam, that help in overall cutoff, general awareness. Right. So how many months Right. current affair you studied for this exam? I studied 6 months, but my main focus was on the last 4 months. But I studied for 6 months. Okay, okay. And did you follow newspaper, RBI website, and PIB website yourself, or you relied on the sources which you used?
I did newspapers, so my primary focus has always been newspapers. I used to read two newspapers every day, So and what what newspaper many you are candidates following? do, What I used newspapers? to follow Sir Business Standard and the Hindu Business Line. Okay, okay. Okay, so what many candidates do is that they read newspapers, but they either don't take notes. What I did was that मैं न्यूज़पेपर की ना स्क्रीनशॉट ले लेता फोन के अंदर जो भी मुझे न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगती थी I used to Mm-hmm. take screenshots. So by the end of my interview, I had around 250 to 300 newspaper screenshots in my phone. So whenever I had time, when I'm traveling or whenever I had free time, I used to go through those screenshots because revision भी हो जाता है और न्यूज़पेपर में काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प कर सकती है और ऑब्जेक्टिव में हेल्प कर ही सकती है तो डोंट ओनली रीड न्यूज़पेपर्स ईदर मेक नोट्स फ्रॉम देम और टेक स्क्रीनशॉट्स फॉर रिविजन. तो न्यूज़पेपर में भी जनरली क्वेश्चन आता है जो एस्पेरेंट्स हैं कि हमें कौन से सेक्शन पे किस टाइप की न्यूज़ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. वेल सर मैं एडिटोरियल पढ़ता था फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनी न्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमी और मोस्टली इकोनॉमी लाइक इफ द न्यू सीपीआई नंबर हैज बीन रिलीज्ड then हम्म. in that article you will find details about कि what consists of CPI कितने बास्केट्स हैं हमारे पास वो सब चीजें भी आपको उसमें मिलेगी. सो एक तरीके से आपके स्टैटिक पोर्शन की प्रैक्टिस हो जाती है उससे. हम्म. सो जो भी अगर इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज होती थी या आजकल कंपनी रिलेटेड न्यूज भी पूछने लग गए हैं ये लोग फेज वन में तो आपको उससे उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होता है कि हाँ इस कंपनी ने इतना इन्वेस्ट किया पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. तो एक तरीके से ये जो फाइनेंशियल न्यूज पेपर थे होते अगर आप पूरा ही पढ़ लोगे तो बेटर ही रहेगा. हाँ हर न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती है बट वो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे देन यू वुड रियलाइज कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए. एक और जनरल क्वेश्चन आता है क्योंकि आरबीआई सर्कुलर्स का वेटेज बहुत बढ़ गया है जनरल अवेयरनेस में या फेज टू क्या है राइट राइट एफएम पेपर के फाइनेंस की बात करें तो हम राइट. और आरबीआई रिपोर्ट्स हैं तो डिड यू रेफर आरबीआई वेबसाइट और आरबीआई सर्कुलर डिड यू स्टडी योरसेल्फ और यू रिलायड ऑन व्हाटएवर यू आर फॉलोइंग. For reports, sir, for annual report and currency and finance report, I refer to the actual report. हम्म. And as far as circulars are concerned, I think, sir, I read it from the current affairs material that I used to get from your coaching institute. But if I had any confusion, I would do my own research as well. Okay, okay. But I think I think in phase two this year there wasn't any question from circulars, but I think in phase one there were questions in general awareness from the circulars. Mm-hmm. Okay. And now comes to the English part, English phase one. And so what strategy you followed or your SBI preparation helped in that? I think sir, my SBI preparation helped in that. And apart from that, I think reading newspaper does the entire work for you in English. You really don't have to do anything separately for that. So I did not do anything special for English. I just went with it and it worked for me. But Okay. I would suggest that if you are not very good in English, then start reading newspapers, start speaking English, start watching English content. Then it's a gradual process. Quant reasoning you can prepare in a month or two by practicing, but English needs time. If you're not good with it, if it's not your natural language, then it needs time, and you have to give it. Okay. So now comes to the phase two part. So for phase two, when you started your preparation, since you have appeared earlier also in this exam. So for this year, Yes, yes. 23, when you started your preparation? I started around March or April. I again studied the static portion. This time with more focus because I think in the last two attempts I took it very lightly, but this time I read everything and even the smallest and the things that we think is very basic, like what is repo rate, what is reverse repo rate. In our mind we think we know it, but we should read it again so that we don't get confused in the main exam. So I started around March or April. First, I did the entire static portion for finance, management, and ESI. And it took me around because I had prepared previously, so I had a broad idea about things. But still, it took me around 20 to 30 days to finish the entire static portion again. Okay. So
this year you made some changes in your strategy, like you give more focus on descriptive part. Right. Okay. So many students face challenge in this part, specifically beginner. So as a Right. beginner, what should be means what was your strategy for the descriptive, and what should be the your advice for the future aspirant? कि एज ए बिगिनर हमें मतलब डिस्क्रिप्टिव को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव के, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छी इंग्लिश होने के बाद, लिखने के बाद भी नहीं कर पाते हैं स्कोर। राइट, सो आई थिंक अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और फिर भी अगर आप नहीं लिख पा रहे हो आंसर, देन आई थिंक आपका कंटेंट नहीं है। कंटेंट होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कंटेंट ही नहीं है आंसर को लेकर, तो आप लिखोगे क्या? इट वुड क्रिएट पैनिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप डेली, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया रहेगा चीज़ों का, कभी चल क्या रहा है दुनिया में। तो उस हिसाब से आप फिर अपने टॉपिक्स चूज कर लो एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स। 20-25 days before the main exam, start making notes. Take help from the coaching institute because they also release their own descriptive content. So you would get a broad idea कि हाँ ये चीज़ें अभी चल रही है। उस टॉपिक से रिलेटेड आप उनके इंस्टीट्यूट वाले मटेरियल से भी हेल्प ले लो एंड देन मेक योर ओन नोट्स एज वेल। रिवाइज कर लो एंड if you're not good with typing or if you have problems with answer construction, then there is no option. You have to type answers and get it evaluated by an examiner. I did not personally do that because typing was good and I focus more on content, that I need content for the exam. If I have content, then I will write the answers in exam. So my focus was to collect as much content as I can and revise it. And in the main exam, I would be able to construct an answer. And constructing an answer would depend on how much newspapers you have read. If you read editorials, if you read news, you would understand how to construct a good answer. That so newspapers again help in descriptive as well. Yes, So try newspaper. focusing on garnering as much content as you can. And if you're not good with typing, because typing speed काफी अच्छी चाहिए होती है, टाइम कम होता है, and अगर कंटेंट आपको नहीं आ रहा, then it would again create panic. So try, अगर टाइपिंग अच्छी नहीं है तो start typing as well and get it evaluated by an examiner. So what was the your major source for the preparation in the phase 2 ESI FM English descriptive? Well, government schemes, sir, I did from CrackGradeB's ministry-wise document that they had, and apart from that, I did my own research as well for every scheme. I mostly focused on flagship schemes and schemes that were in use in the last 1 year. Because otherwise, there are just so many schemes, and you cannot read all those schemes in very detail. So my focus was on flagship schemes and schemes that were in use in the last 1 year. So I used CrackGradeB and then my own research from the internet. And then there are some sources that are used for UPSC preparation. You can also source this as well if you want to prepare government schemes very deeply, because it has the maximum weightage in ESI and it's very unpredictable. Yes, yes. Okay. And for other parts like ESI descriptive, finance static, management static. So what was the main source of? For the entire static portion, sir, I relied on CrackGradeB's PDF for entire static portion. Yeah. Okay. And one major question generally our subscribers ask that how should how should an aspirant utilize our course? So can you share your strategy that how you utilized our course? This is the most means most of the aspirants, future aspirants, or who are our subscribers generally ask me this question, that sir, please ask this question to any selected candidate. So I forgot to ask the earlier candidates. So right, how did you utilize? Well, I think that CrackGradeB's content is already very precise and crisp. So what I did was that I mostly use PDFs. I'm not usually the person who would watch videos. So I read all your PDFs. Okay. For be it static portion or the descriptive portion, I read your PDFs because compared to other coaching institutes, they have very exhaustive content. And when वहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि उसको यूज कैसे करें, बिकॉज इतना सारा कंटेंट उसमें से पढ़ना क्या है, बट योर कंटेंट इट्स वेरी क्रिस्प, तो पूरा ही पढ़ना है वो. Okay.
सो जनरली पूछते हैं स्टूडेंट्स कि हमें उसमें से भी नोट्स बनाने चाहिए या उसी में हाईलाइट करके पढ़ लें. सो हाउ डिड यू स्टडीड? Well, for current affairs, sir, I highlighted important news and then I would used to revise it a lot. Like मैंने एक PDF को कम से कम 10 बार रिवाइज किया होगा, because then only you would able to retain information for the main exam. Because इतना ज़्यादा information हो जाता है, so it's important to revise. So और I ये used to एग्जाम highlight. और ये एग्जाम एक्चुअली है भी क्या है कि फैक्ट्स और डेटा सबसे ज्यादा पूछा जाता है. एमन हम फेज 1 Exactly, का sir. जीए हो, फेज 2 का ईएसआई की स्कीम्स हो, पीआईबी की न्यूज हम्म. है, रिपोर्ट्स हैं, या फाइनेंस में हर जगह मतलब बहुत स्टेटिक डेटा रहता है. हाँ, तो यस. सर वो उसके लिए रिविजन ही काम आता है. एंड ऑफ कोर्स बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यस. यस. वो पढ़ना भी काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे डिस्क्रिप्टिव, मुझे याद है 2021 में दे हैड अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फ्रॉम बजट. And I think last year, or I think this year, economic services they had a question in descriptive and in objective as well. So budget and economic survey becomes very important. And RBI reports, majorly यस. currency and finance report. They said there was a direct question from currency and finance report in descriptive. यस. यस. And another very underrated part is the speeches of RBI dignitaries that they give at various forums. Those speeches are very helpful for descriptive and for interview as well. And I remember writing direct answers from governor speeches. In my I used to incalculate the speeches in my answers as well. That really helps you. And speeches पर काफी informative होती है, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है काफी simple language में. बिकॉज मोस्टली जहाँ पे आरबीआई डिग्नेटरी स्पीचेस देते हैं वो मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देते हैं, तो वो काफी हेल्प करता है. तो वो स्पीचेस आरबीआई की वेबसाइट पे आती है, तो पढ़नी चाहिए फॉर डिस्क्रिप्टिव, रियली वो हेल्पफुल. एवन लास्ट टू लास्ट ईयर भी मैंने देखा कि फेज 1 जीए में भी एक क्वेश्चन स्पीच से डायरेक्ट पूछ था. क्रिप्टो करेंसी पे एक स्पीच था आरबीआई हम्म. डिप्टी राइट. गवर्नर का, आई थिंक, और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ हम्म. गया था. इस साल नाबार्ड में भी एक आरबीआई के गवर्नर के स्पीच से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया. तो डिस्क्रिप्टिव में भी राइट. हेल्पफुल है और काफी अच्छा, मतलब फाइनेंस इकोनॉमी के टॉपिक रहते हैं ना, वो बहुत हाँ. बेनिफिशियल रहता है नॉलेज के लिए भी. एवन इंटरव्यू में भी मैंने राइट. देखा है कि बहुत हेल्पफुल है. हाँ, और काफी इंटरेस्टिंग होती है, ऐसी नहीं स्पीचेस बोरिंग हाँ, होती हाँ, है, हाँ. स्पीचेस काफी इंटरेस्टिंग होती है, इंटरेस्टिंग मजा होती है. आता है पढ़ने में. अच्छे इफ यू हैव फैक्ट्स होते हैं इंटरेस्ट. उसमें. राइट, अगर इंटरेस्ट है आपका इकोनॉमी फाइनेंस बैंकिंग में, तो आपको मजा आता है पढ़ने में. ओके, ओके, ओके उदय. अब जैसे ईएसआई के लिए हम पीआईबी पढ़ते हैं, स्कीम्स पढ़ते हैं, और पीआईबी मतलब करंट अफेयर एक तरह से. हम्म. कितने मंथ्स का पीआईबी यू रेफर्ड? सर आई डिड नॉट स्पेसिफिकली रीड पीआईबी बिकॉज आई थिंक उसमें एफर्ट बहुत डालना पड़ता है. और मोस्ट ऑफ पीआईबी का मोस्ट पार्ट आपके करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है, दैट इज व्हाट आई फील. तो हम्म. स्पेसिफिकली डेली पीआईबी की वेबसाइट पे जाना और इतना कंटेंट होता है वहाँ पे, हम्म. वो पढ़ना. मुझे लगा कि एफर्ट टू रिजल्ट रेशियो इतना नहीं होगा उसमें, तो आई फोकस कि मैं करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कर लूँ, rather than हम्म. referring to PIB every day. If you can do it, well and good, it will help you. बट अगर आपके पास टाइम कम है, देन जस्ट फोकस ऑन करंट अफेयर, बिकॉज मोस्टली पार्ट वहाँ से कवर हो जाएगा. एंड ये सही में पिछले मैंने मेरा तीसरा अटेम्प्ट था फेज 2 का. हर साल किसी ना किसी बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट उन्होंने पूछी है. हम्म. तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ओईसीडी, यूएन, यूएन. यस. ओईसीडी, तो ये जो 5-7 इंस्टीट्यूट्स है, इनकी जो रिपोर्ट्स है एग्जाम से 2-3 महीने पहले की, वो अच्छे से पढ़ना विल बी वेरी हेल्पफुल. हर साल इससे क्वेश्चन आया है. और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस ईयर कि दे वुड आस्क अस टू राइट ऑन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन, क्योंकि इस पर अच्छा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लाइटली नहीं लेना. सर सिर्फ मेजर मेजर ऐसे तो महीने में 50 रिपोर्ट्स आती होंगी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की, बट जो मेजर बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हीं की उनकी रिपोर्ट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस बार डिस्क्रिप्टिव में उन्होंने वर्ल्ड बैंक की कोई माइग्रेंट्स वाली रिपोर्ट थी, उससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा था. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. एंड यस. ऑब्जेक्टिव में भी देयर वाज जीडीपी वाला जो क्वेश्चन आया था, पूरा केस स्टडी आई थी 10 नंबर की, तो उस पे ध्यान देना है. ओके, ओके. So, for the finance management part, any specific strategy you followed? Because again, number of facts you have to cram. राइट. एंड मैनेजमेंट में सर आई वुड से कि मुश्किल से 5 या 6 टॉपिक्स होंगे, सारे क्वेश्चंस उन्हीं 5-6 टॉपिक्स से आते हैं. मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, 2-3 टॉपिक्स और हैं. You have to cover those topics very extensively, and if you do that, objective management is very scoring.
यस यस। एंड क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं, वन कैन डू इट वेरी इजीली। तो मैनेजमेंट पे फोकस करना है, टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना है मैनेजमेंट को, बिकॉज लोग ये समय फाइनेंस में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं मैनेजमेंट को भूल जाते हैं। बट हम्म। मैनेजमेंट इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, क्वेश्चन टफ नहीं आते। एंड एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न, देन इस बार तो काफी इजी आया था फाइनेंस का पेपर। आई मीन हर बार ही फाइनेंस का पेपर कंपेरेटिवली ईएसआई से इजी ही आया है। तो बेसिक फाइनेंस में स्टैटिक पार्ट थोड़ा ज़्यादा आता है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। और दूसरा, आई थिंक पिछले साल इसी हमारे अटेम्प्ट में ही उन्होंने न्यूमेरिकल्स दोबारा ऐड किए थे, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो। बट इस साल एक क्वेश्चन आया नहीं था, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था जो कोई भी कर सकता था। हम्म। देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस साल हो सकता है वो थोड़ा न्यूमेरिकल का रेशियो का क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि रेशियो में आराम से 10 नंबर की केस स्टडी बन सकती है। बिकॉज आई एम हम्म। फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आई नो कि रेशियो से आराम से 10 नंबर की केस स्टडी बन सकती है। तो पिछले साल हो सकता है इन्होंने जानबूझ के नहीं पूछा कि हमने इसी साल ऐड किया, बच्चे पढ़ के आएंगे, तो नहीं पूछते हैं। तो वो इस साल डेफिनेटली मुझे लग रहा है रेशियो से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो अच्छे से करना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इजी होते हैं रेशियो वाले क्वेश्चन। वंस यू हम्म। ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स, आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। ओके ओके। एक और जनरल क्वेश्चन पूछा था स्कीम्स के लिए। सबसे ज्यादा स्कीम्स पे कोई बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, लॉन्च हम्म। ईयर, सनसेट ईयर, राइट और राइट। फंडिंग रेशियो, और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कीम की होती है, बहुत सारी होती है। और आरबीआई के लिए आपको डेप्थ में पढ़ना होता है, क्योंकि स्कीम्स, राइट। दूसरा स्कीम्स की वेटेज बहुत ज्यादा है। मान लो 50 में से हम्म। अप्रोक्सीमेट हम्म। 60% आपका स्कीम से क्वेश्चन आते हैं। 30 मार्क्स का, 32 मार्क्स का, मतलब एवरेज आ ही रहा है हर साल। तो स्कीम्स हम्म। के फैक्ट्स को कैसे क्रैम किया जाए? क्या स्ट्रेटजी यू फॉलोड? व्हाट स्ट्रेटजी यू हम्म। फॉलोड टू क्रैम द फैक्ट्स? राइट। आई वुड गेट बैक टू दिस क्वेश्चन, बट सर मुझे वापस याद आया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है, इसमें भी पिछले तीनों साल क्वेश्चन आया है, बी हाँ हाँ डिस्क्रिप्टिव और हाँ। ऑब्जेक्टिव। ये टॉपिक भी ऐसा, एक तो बहुत ही ये सब्जेक्टिव टॉपिक है तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। बट हम्म दिस इज अगेन आफ्टर मैनेजमेंट, इफ देयर इज वन टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आई वुड अर्ज द एस्पिरेंट्स टू कि इस पार्ट पे फोकस करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन आता है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट स्कीम्स, देन आई वुड से सर इतनी सारी स्कीम्स हैं, हर स्कीम को इतना डीपली पढ़ना इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो हम्म। व्हाट एज आई सेड कि आई डिलाइड फ्लैगशिप स्कीम्स कर लो, और जो स्कीम्स पिछले एक साल में न्यूज में थी उनको डीपली पढ़ लो। अगर उसके बाहर भी अगर क्वेश्चन आता है, जो कि हो रहा है पिछले 2 साल से यही हो रहा है, अलग से ही पता नहीं कोई तीसरी स्कीम पूछ लेते हैं। अगर ऐसी स्कीम आती है तो फिर वो सबको ही सरप्राइज करेगी, तो उसका हम्म। इफेक्ट कट ऑफ पे दिख जाएगा। तो ऐसे हर स्कीम को इतना डीपली अगर पढ़ने के लिए जाएंगे तो बाकी चीजें छूट जाएगी। तो जस्ट फोकस ऑन फ्लैगशिप स्कीम्स एंड स्कीम्स इन न्यूज, और सोशल सेक्टर की जो स्कीम्स है बड़ी बड़ी, उस पर फोकस कर लेना चाहिए। उससे क्वेश्चन आ गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं आया तो सबके लिए टफ होगा, क्योंकि ये सही में वैसे ही सबके मार्क्स कम आते हैं, तो वो फिर कट ऑफ पे दिख जाता है। इफ विल ट्राई कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, सारी स्कीम्स कर लूँ बहुत डीप में, वो पॉसिबल भी नहीं होगा। इम्पॉसिबल है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो जाएगी दिमाग में, एंड में कुछ नहीं कर पाओगे फिर। तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट। भाई अगर आपका लक अच्छा है तो जो स्कीम आपने रात को पढ़ी थी उससे आ सकती है एग्जाम में। हम्म। तो देखिए। So they you were working, and while working you were preparing. So एक स्ट्रेटजी क्या थी सब्जेक्ट वाइज की? आप ईएसआई का जैसे स्कीम्स पढ़ रहे थे, करंट अफेयर पढ़ रहे थे, या पैरेलल में फाइनेंस मैनेजमेंट भी आपने कंटिन्यू रखा? तो क्या स्ट्रेटजी डे वाइज फॉलो की थी कि आप सपोज कि 2 वीक में 2 दिन आप ईएसआई पढ़ रहे थे या 2 दिन एफएम पढ़ रहे थे? तो क्या मतलब एक स्ट्रेटजी या फॉलो की थी? फिर मेरा शेड्यूल यही रहता था कि सुबह उठ के बैंक जाने से पहले 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, शाम को आके क्वांट रीजनिंग के एक एक 20-20 मिनट के मॉक्स देने हैं। उसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन दी स्टैटिक पार्ट पोर्शन और द करंट अफेयर्स पोर्शन। सो मैं ये कोशिश करता था कि 2-3 महीने स्टैटिक वाली पीडीएफ पढ़ ली, तो फिर नेक्स्ट डे फिर मैं करंट वाली पीडीएफ पढ़ूंगा। बट क्वांट रीजनिंग वाले मॉक्स और न्यूज़पेपर ये तीनों दिन कॉन्स्टेंट रहते थे, इन पे मैंने हम्म। स्किप एज फार एज कंसर्न मैंने नहीं किया था। बट फिर वो स्टैटिक और करंट पोर्शन को मैं डेली वो करता था अल्टरनेटिव डेज पे। सो एंड व्हाट अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट? मतलब डिस्क्रिप्टिव की कैसे प्रिपरेशन की थी, प्रैक्टिस एंड कंटेंट के लिए? क्योंकि आपको अगेन राइटिंग के लिए कंटेंट चाहिए, बहुत सारा याद होना चाहिए, आपके माइंड में पॉइंट्स होने चाहिए। हम्म। सो हाउ डिड राइट। यू प्रिपेयर फॉर दैट पार्ट? फिर फाइन टॉपिक्स जो आपको लगता है एग्जाम में आ सकते हैं,
यूज द कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन मेक योर ओन बुलेट पॉइंट्स। एक टॉपिक पर अगर आप 10 12 बुलेट पॉइंट्स बना पा रहे हो, इट इज फाइन। एग्जाम में आप आराम से 400 500 वर्ड्स का आंसर उस पर लिख सकते हो। मेक बुलेट पॉइंट्स एंड देन रिवाइज देम एज मच एज यू कैन, बिकॉज उसके आसपास से आपके मोस्टली क्वेश्चन आएंगे। तो दैट वाज द स्ट्रेटजी आई फॉलोड। मैंने बैठ के आंसर्स टाइप नहीं करे बिकॉज टाइम भी नहीं था, एंड आई ट्रस्टेड माई सेल्फ कि एग्जाम में मैं बना लूंगा आंसर अगर मेरे पास कंटेंट होगा तो। एंड इफ यू थिंक कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, देन गो अहेड, टाइप आंसर्स एंड take it to some examiner and get them evaluated. Okay, okay. So, one more question that about the word limit. So, 2000 word limit for a single paper in 90 minutes. 600 Right. words you have to write for 15 marker question and 400 for 10 marker question. So, Right. were you able to reach the word limit in all three papers? No sir, I did not reach word limit. English में I think English में क्योंकि word limit कम होती है काफी, so that you can reach. But in ESI and finance, writing 2000 words in 90 minutes and of good quality content is very very difficult. And I don't think they even expect you to reach 600 and 400 words for every answer. So I think what I did was, I think the 10 markers there where you had to write 400 words, most of my answers were of 300, 320 words or Okay. 350 words at max. And for 600 words by question, it was around 500. Because I again focused on quality. कि अगर मैं 450 500 वर्ड्स का क्वालिटी कंटेंट लिख देता हूँ, इट्स बेटर देन राइटिंग 600 वर्ड्स ऑफ नॉट सो क्वालिटी कंटेंट। तो वर्ड लिमिट, ऑफ कोर्स देयर इज वर्ड लिमिट है कि आपको इससे ऊपर नहीं जाना, बट उससे नीचे अगर आप प्लस माइनस 80 90 कर रहे हो तो इट्स फाइन। मतलब माइनस 80 90, प्लस तो इतना ऊपर नहीं जाना है, बट माइनस ही रहना है। तो अगर इतना कर सकते हो देन इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज बहुत टफ हो जाता है सर इतना। अगर आप एक आंसर 600 वर्ड्स का लिखने जाओगे, आगे वाला छूट जाएगा, अगर आगे वाला आप 200 का लिख पाओगे। एग्जाम में आपको ये स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि आप जो आंसर लिख रहे हो एक क्वेश्चन का, आपको लग रहा है नेक्स्ट आंसर के मेरे पास टाइम कम बच रहा है, तो व्हाट आई डिड वाज दैट मैंने एक आंसर के बीच में छोड़ा, पहले मैंने आगे वाला आंसर लिखा आराम से 300 350 वर्ड्स का, देन आई गॉट बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन कि आप अब मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। अदरवाइज व्हाट वुड हैव हैपेंड, मैं वो आंसर तो कंप्लीट कर लेता, बट नेक्स्ट वाले में 100 150 नंबर पे समझ जाता। दैट वुड हैव बीन अ ब्लंडर। तो वो स्ट्रेटेजाइज आपको करना पड़ेगा, कितना लिखना है, क्या लिखना है, बिकॉज टाइम सीरियसली बहुत कम होता है डिस्क्रिप्टिव में। Okay, okay. So, Uday, for the English descriptive, because you already have shared that how you prepared for the ESI and FM descriptive. So, any specific thing you would like to share about the English descriptive? वेल सर, जो ऐसे पार्ट होगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में, वो तो आपकी ESI और FM की प्रिपरेशन से मोस्ट मोरलेस कवर हो जाएगा, बट वहाँ पे वर्ड लिमिट कम होती है तो आपको उसको अडेयर करना पड़ेगा। दूसरा जो प्रीसी वाला पार्ट होता है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं दैट यू हैव टू गिव इट अ टाइटल। बहुत सारे लोग टाइटल देने भूल जाते हैं उसको, तो वहाँ मार्क्स कट जाते हैं। दूसरा प्रिसाइज होना है, उसमें वर्ड लिमिट आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है। 180 वर्ड्स थी शायद हमारे टाइम पे, तो 180 वर्ड्स से ऊपर नहीं जाना चाहिए वो। एंड ट्राई टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। डायरेक्टली पैरा से कॉपी नहीं करनी है चीज़ें, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। So try to write it in your own words. And as far as reading comprehension is concerned, again वहाँ पे भी आपको as far as possible आपको खुद के वर्ड्स में ही आंसर्स लिखना है। दैट वुड शो कि आपने पैसेज एक्चुअली में समझा है, एंड नाउ यू कैन राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते आरसी में, वो पैसेज इन पर्टिकुलर टफ हो सकता है समझने के लिए। पिछले 2 3 साल से वो पैसेज जो आ रहा है वो फाइनेंस, इकोनॉमी, बैंकिंग से रिलेटेड ही आ रहा है। सो अगेन यहाँ पे न्यूज़पेपर हेल्प करेगा। अगर आपने एडिटोरियल्स पढ़े हैं फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड, आपको इजीली पैसेज समझ में आ जाएगा और आप आरसी का आंसर लिख पाओगे। बट अगर आपने इतना आप इतने वेल वर्स्ड नहीं हो इकोनॉमिक्स से, फाइनेंस से, बैंकिंग से, तो आपको टफ लग सकता है आरसी। और अगर आपको आरसी टफ लगा तो आप उसके आंसर्स ढंग से नहीं लिख पाओगे। सो दैट वुड बी माई रिकमेंडेशन। उसमें भी आरसी में भी आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होता है। एंड मेरे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में मेरे 3 अटेम्प्ट में मार्क्स अच्छे आए, लाइक अबव एवरेज मार्क्स आए हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो देन इट वुड वर्क, इट वुड डू वेल फॉर यू। Okay, okay. So there one more question I generally ask to aspirant that
is it necessary to follow multiple shows for this exam? Because you have appeared three, it was your third attempt. So Yes, you sir. are having good experience. Uh, you are having good experience. So Yes, sir. is it necessary? Because I have seen many aspirants struggling for multiple sources. They will subscribe multiple courses, or they will collect the material from the multiple sources, and they at the end no results. So is Right. it really necessary? No, sir. Agar I think if you do one course with heart and do it properly, then I think it's enough. ऐसे तो सर कितने ही कोर्सेज ले लो कभी कम ही नहीं होंगे वो. Mhm. So I prefer कि stick to one source, stick to newspapers, do your own research, but multiple courses लेके कुछ नहीं होगा. एंड में कंटेंट सेम ही मिलेगा आपको, और कोई भी कोर्स ऐसा खराब नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो. So take one course, utilize it well, and do your own research as well. Don't blindly rely on any course. बाहर से भी कंटेंट पढ़ो, इंटरनेट पे सर्फिंग करो, और भी बहुत सारे नेट पे इन्वेस्टोपीडिया हो गया और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जो कि काफी हेल्पफुल है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है. तो वहां से पढ़ो एंड इट वुड वर्क. मल्टीपल सोर्सेज लेके कुछ ऐसा खास फायदा होगा नहीं, एंड में कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा और कंफ्यूज हो जाओगे. Yeah, okay. Oh, Uday, now comes to the interview part, the most important. I mean, you have cleared. Suppose you have any aspirant have cleared the phase two. Still, it is not 100% confirmed that you will be selected. Even you have scored highest marks in the phase two, because interview is very crucial and important thing. We have seen in the past many candidate. I mean, second highest in this phase two part were not finally selected. So, what was your strategy for the interview, and on what areas any beginners should focus for while preparing for the interview? Well, sir, if you are a working candidate, then you have to prepare your profile very well. What do you do in your organization? And Mhm. questions around your work profile will be asked. And if you are working in a bank, then of course it becomes very relevant. So do your work profile very well, because they expect you to answer questions very promptly related to your work profile. And if you are a banker, then be prepared to answer questions around banking, economy, and RBI as well. And if you are a fresher, then try preparing your educational background, because they won't have much to ask you, so they would rely on your education background for questions, and then questions related to RBI, economy, and because for freshers the scope of questions is very wide, they can ask you anything. So be well prepared around RBI, its functions, and anything that is in news, your hometown, your education background. It becomes very important if you're a fresher. And for working candidates, your work profile becomes the most important part. So, what was your experience with the board? Well, sir, it was going into the interview, I was confident that, I have been BCom, I have worked for a UCB, I have worked for a commercial bank. So my profile is well aligned with what RBI wants. But that did not mean that I would get overconfident. But yeah, I was confident going into the interview. The board was cordial, sir. They asked me very basic questions. I was expecting very deep and very tough questions, but they asked me very basic, like what's the difference between a cooperative bank and a commercial bank? What is the difference between NBFC and banks? How does RBI make money? These were some of the basic questions that they asked me. So I would say that I got lucky in the interview, because they did not ask me very tough questions, because candidates who went before me and candidates who went after me, the board was asking very tough questions, very deep questions. So, but they were nice to me, and I'm glad that they were. So my interview experience was very cordial. The panel was nice. They didn't grill me on anything. But yeah, I would also say, because I was the my interview was on 7th December. So I was one of the last candidates who was interviewed, because the interviews ended on 8th December. So I had read a lot of transcripts, a lot of interview experiences, and the conclusion was that be ready to be grilled if your profile does not align with RBI. For example, you have done BTech, you have done computer science engineering, and you are working in an IT company, then you would have to convince them that why you want to be in RBI. So be well prepared to be grilled.
if your work profile does not align with RBI, they are not grilling as in to don't give you marks. They're grilling just to see how confidently you tackle those questions, to see how you defend yourself. There are candidates who don't have very relevant work profile, who don't have very relevant education background, but they still got selected. So you Yes, just have to stay calm under pressure and be well prepared to answer questions that might make you feel uncomfortable at some point. But don't panic at all. okay. So Uday, this preparation part is over. So, what will be your advice to the future aspirant, those who are preparing? I would say, so stay consistent and don't take any portion for granted. And what I see is that, I mean, I agree, especially for my fellow bankers out there who are working in banks, I would just say that there will be bad days as well. You would think, यार अब कैसे पढ़ाई करूँ, इतना लंबा दिन था, आज 8 बजे मैं घर पे आया हूँ. At least try studying for 1 hour. I know how it feels after a long day that you don't want to study, but you have to stay consistent. अगर 1 घंटा ही पढ़ोगे, then confidence आएगा कि I'm trying. So the most important part for working candidates is to stay consistent, and results will come. Maybe if this is your first attempt, give it your all. अगर नहीं होता है तो second attempt में help मिलेगी. Take it as a learning, because I think अगर ये मेरा first attempt होता तो शायद मेरा clear नहीं होता. The only reason I cleared this time कि मैंने पहले 2 attempts दे रखे थे. So that really helps you. Give it your all. नहीं होता है तो don't be disheartened. Try again next year, and ये preparation बहुत काम आएगी. Yes. So one more question I asked to our subscribers specifically, that you were working in SBI, so costly courses was not a problem for you. जनरली एक परसेप्शन रहता है माइंड में ना, मैंने देखा है मतलब Right sir. इंडियंस में स्पेसिफिकली कि अगर हाँ, इकोनॉमिकल महंगा है है तो तो अच्छा होगा. हाँ महंगा होगा तो अच्छा होगा, इकोनॉमिकल है तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा. तो Right आप बैंक में काम कर रहे थे तो आपके लिए मनी वाज नॉट ए प्रॉब्लम, कॉस्टली कोर्स. सो right sir. व्हाट मेड यू टू गो फॉर क्रैक? So I think first of all that content is crisp. The other courses that are in the market, they have very exhaustive content, because I think they rely on it कि अगर एग्जाम हो जाएगा, so that at the end of the day हम ये बोल देंगे कि सब हमारे कंटेंट से आया है. अगर तुम कंटेंट ही इतना ज्यादा दे दोगे तो ऑफकोर्स तुम्हारे कंटेंट से आएगा कुछ चीजें कहीं आराम से दूसरे प्लेनेट से जो क्वेश्चन लाएगी नहीं आरबीआई. तो क्रिस्प कंटेंट है क्रैक ग्रेड बी का, एंड मुझे तो पढ़ के काफी अच्छा लगता था कि हाँ. ऑल्सो जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो था क्रैक ग्रेड बी का, जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, कोई नई चीज आ गई है मार्केट में, अभी भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो क्रैक ग्रेड बी उस पर अलग से डिस्क्रिप्टिव डाल देगा. आई थिंक दैट वाज वेरी हेल्पफुल. एंड द फैक्ट दैट इट्स इकोनॉमिकल, बिकॉज आई थिंक बाकी कोर्सेज से 1/3 में क्रैक ग्रेड बी का कोर्स आ जाता है. तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी, अगर इतना इकोनॉमिकल कंटेंट आपको मिल रहा है एंड बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो व्हाई शुड नॉट गो फॉर इट. ओके एंड एज आई सेड, कोई भी कोर्स बेकार नहीं होता. इट्स जस्ट हाउ यू स्टडी इट. ओके. सो उदय, thank you for joining with us, and I wish you good luck for your future journey. And this session will help the future aspirants, as you have cleared many doubts today in this session. Right sir. Thank you sir. Thank you very much.